morning, my dear children. Welcome to the class. In this class, we are going to start the first chapter of your English grammar book. And today, our topic is about the sentence. So, before starting this chapter, I would like to discuss something about your sentence. First of all, you have the basic knowledge about your tense sentence. What is sentence is called. So, let me introduce it. You can see there are 26 letters in your English alphabet. A single letter, this is your letter. Then a group of letters form your word, like that. A group of words form your sentence. I tell it is your letter. Then group of letters form your word, then group of words form your sentence. From this we got to know that if a group of words form something and that has some meaning of its own, at that time the group of words may be called a sentence. I have written the definition of your sentence, so let's look at it. What is a sentence? A sentence is a group of words. A sentence is a group of words that have a specific meaning of its own. कोई बार मना करा? जनता गोटे लेटर दिला, अनेक लेटर मिसी करी वर्ड सृष्टि करी वर्ड बनाले, हेंता अनेक गुड़े वर्ड मिसिकी सेंटेंस बनाले. तो सेंटेंस काय करना भिन्न भिन्न शब्द भिन्न भिन्न वर्ड जेते बेले अन्य वर्ड संगे मिसिकी किछि गुटे अर्थ सृष्टि करिछ ताके हम कहसु वाक्य. बुझेला? So you can see two sentences. Now we shall discuss what a sentence consists of. Usually a sentence consists of two parts. One is your subject and another is your object. That means, another is your predicate. In the predicative part, your object also lies. So we got to know that each and every sentence has two parts. One is your subject and the other part is your predicate. So first of all we have to know what is your subject and what is your predicate. If in the sentence someone is doing something, or you must have known, if a group of words is not meaningful, then we cannot call that a sentence. As if there will be a meaningful group of words if there is your main word, and if there is your verb, there must be some action. So I just want to say, in the sentence, if someone is doing something, if an action is doing by someone, or if the action is being done by someone, that particular person will be called as your subject. You can see Ram is a boy. Here is our verb because there is no such action word, but this type of sentence is called your stative verb sentence. That means in a sentence your predicative part starts with your verb or helping verb. I am repeating this. Your predicative part. What? Your predicative part
starts with your verb or helping verb. Helping verb means, as I told you, each, am, are, was, were, has, have, had, etc. So, in short, if someone is doing something, जदि केही वाक्य रे किसी काम करूछि, वाक्य जो काम विषय रे कहा आइछि, से काम जदि जणे को द्वारा होछि, सेही व्यक्ति जन को कहा दिबो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ओडिया रे कहा जाए, सब्जेक्ट को ओडिया रे कहा जाए कर्ता बोली। कर्ता माने जे करे वाक्य रे जो कार्य अछि, सेही कार्य को जे करे ताकू कहा जाए कर्ता। और प्रेडिकेट रो मान होछि विधेय, जेउति रे कि तुमर क्रिया संगे संगे ऑब्जेक्ट मध्य रही थाए। बुझला? तो एइटा तो थिला दुईटी अलग अलग वाक्य। वर्तमान आउ देखिबा जे हम सेंटेंस को चिन्हिबा किपरि। राम इज, now you can see the table. In the table there are group of words, different group of words. This part is A part and this is your B part. I told you that what is your sentence? A sentence is a group of words that have meaningful or meaning of its own. That means this is also a group of words. Ram each, Rahul goes to, but they do not have their specific meaning because Ram each বা রাম অটে কোন অটে বা কোন করুছি, সেইপরি রাহুল গোস টু রাহুল যায় কোठी যায়। যদি কোনসি শব্দর গুচ্ছা বা অনেক গুড়ে শব্দ মিশিকি যদি কিছু অর্থ প্রকাশ করে নাহি, তাহলে সেমানকু আমি সেন্টেন্স কইবা নাহি, সেমানকু ফ্রেজ কিংবা ক্লজ কোয়া যায়। আমি आगो बोले से विषय मध्य पढ़ा। तो आज आम विषय होची सेंटेंस। ताले राम इज जदि एही अंश को बा एही शब्द जोड़ा को एही शब्द जोड़ा सहित मिलई देबा, ताले राम इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। यार उठाला राम प्लेग्राउंड रे बा खेल पड़िया रे खेलु अछि। हमें एही वाक्य रो किछि स्पष्ट अर्थ विषय जानिबे। राहुल गोes to school, राहुल विद्यालय को जाए। कोठी जाए? विद्यालय को जाए। अर्थात ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंग। तो एठू हम जानिबा को पाइबे जदियो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ने गठित, जदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स निजस्व जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश करू नांती, सेमानन को हमें सेंटेंस कहिबा नाही। और सेंटेंस जदि परस्पर सहित वर्ड्स जदि परस्पर सहित मिसी कोनोसी अर्थ को प्रकाश करूछंती, तेबे सेमानन को हमें सेंटेंस बोली कहिबा। एवं सेंटेंस केते भाग माने सेंटेंस गोटे सेंटेंस रे केतोटी पार्ट रही थाए, केतेटी भाग रही थाए। गोटे सेंटेंस रे दुईटी भाग रही थाए। गोटी होची सब्जेक्ट और अन्यटी होची प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट काकू कहबा? सब्जेक्ट हम ताकू कहबा जे वाक्य रे कोनोसी कार्य होउथिबा एवं सही कार्य को जे करूथाए ताकू कुआ जे सब्जेक्ट बा कर्ता। एवं सब्जेक्ट को छाड़ी बाकी जहा सब रही गला ताहा हमें प्रेडिकेट पार्ट बा विधेय पार्ट बोली कहथा।